Okay, so hi everyone. Let's start with the day 3 of quiz. However, it's written day 2 because I haven't changed the slide because of lack of time. I hope you guys understand. And this channel I have started recently, yesterday only, and I've started posting these quizzes here. However, I'll be coming up with a lot of educational content because recently I posted in Instagram that I'll be dealing an entire book, Tej and Jigar, okay, for plant physiology. So successively as the time passes and जैसे जैसे I'll get time, तो उस हिसाब से I'll come up with content. Let's start with the answers of the quiz. So the topic of the quiz on Instagram was cell biology. However, on Telegram it was plant physiology. I'm not dealing with the questions of the Telegram because they were very trivial. They were very basic questions. The moment I'll start posting advanced questions here, then I will be dealing them along with the questions of Instagram. Okay, so for now only the Instagram questions will be dealt. So the first question was the transmembrane protein which is present on the outer membrane of gram-negative bacteria. You all know the answer because the transmembrane protein which is present on the outer membrane of gram-negative bacteria that forms a channel here is known as porins. Okay, so the answer will be porins. A little bit about porins. Porins are present on the outer membrane of gram-negative bacteria. That's what the question was. And then they are present on the outer membranes of mitochondria as well. Okay, on the outer membrane of mitochondria, porins are present. The functional porin is present in the homotrimer form. That is, all the units are similar. This is called as functional porin. Also, wherever porins are performing functions, so in many cases majority में आप पाएंगे that homotrimer porins are acting. Okay, not that कि homotrimers के अलावा कुछ नहीं होता, but they are acting majorly as functional porins. अब आते हैं हम specificity में. By name जो porins हैं उन्हें देख के लगता है कि they are selective, but ये सिर्फ सिलेक्टिव नहीं होते, दे आर नॉन सिलेक्टिव एज वेल. सो आप कभी भी ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कम इन 4 मार्क्स इफ इट कम्स. सो फ्रॉम पोरेंस द क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बिकॉज दे आर बोथ सिलेक्टिव एज वेल एज नॉन सिलेक्टिव. तो सिलेक्टिव होते हैं for sugars and for some other ions they are non-selective. What is the significance and the disease relevance of these porins? That is, a variety of viruses, these bacterial porins, they act as receptor for a variety of viruses. That is, virus which infects bacteria are known as what? Bacteriophage. So for bacteriophage viruses, these porins, they will act as receptors. Okay, so porins act as a receptor for variety of viruses. This can also become a statement. Coming to the research part, I took all these statements from cell biology book, that was I guess Bruce Albert's. However, I will be leaving this paragraph for you. You guys have to note. आप पढ़ेंगे इसे एंड यूल मेक योर ओन पॉइंट्स. फर्स्ट, दे एग्जिबिट वेरिंग डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. दैट इज़, ऐसा नहीं है कि वो सब सारे सबस्ट्रेट से सेम इंक्लिनेशन या सेम एफिनिटी रखते हैं. वो हर एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना एफिनिटी शो करेंगे उसके लिए. दोनों होते हैं, नॉन स्पेसिफिक एज वेल एज स्पेसिफिक. सिलेक्टिव किसी किसी के लिए होते हैं एज वेल एज सिलेक्टिव चार्जेस के लिए भी होते हैं. तो आप ये पूरा पढ़ेंगे एंड 4 मार्क्स में ये आ सकते हैं स्टेटमेंट्स. तो आप इन स्टेटमेंट से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अपनी कॉपी में नोट करेंगे. मूविंग फर्दर, अब आता है कि जो हमारे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस हैं, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, जब भी आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन की जब आप बात करते हैं, तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस कहाँ लगता है आपको नेचुरली होंगे? नेचुरली मुझे तो लगता है कि उन्हें हाइड्रोफोबिक फोर्सेस लेना चाहिए, प्लस वो इंटीरियर में होते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर जो है ना मीडियम में वो आपके वाटर प्रेजेंट है. मीडियम में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. तो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस दे रेपेल वाटर. सो व्हाट दे विल ट्राई कि वो उस एरिया में मैक्सिमली ऑक्यूपाई हो पाए जहाँ पे कि वाटर बहुत कम है. तो वो मेम्ब्रेन का इंटीरियर हिस्सा लेते हैं. इस इंटीरियर हिस्से में मेजरली हाइड्रोफोबिक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं और ऐसे प्रोटीन्स जो कि इस हिस्से से पास होते हैं या इस जगह से निकलते हैं या इस जगह को यूटिलाइज करते हैं, दे आर व्हाट? इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन. सो दे आर व्हाट? इंटीग्रल प्रोटीन. ओके, तो इस केस में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस प्राइमरली किस में इन्वॉल्व होंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स में. आई थिंक ये भी आपने
एज सच ही कर लिया था क्योंकि दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बट आई एम टेलिंग यू द लॉजिक कि एक्चुअल में जो लॉजिक है वो क्या होगा. ओके, देन द क्वेश्चन इज माइक्रो डोमेन प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर. जैसे ही हम माइक्रो डोमेन का नाम सुनते हैं मुझे तो लिपिड राफ्ट ही याद आता है, बिकॉज दीज आर द माइक्रो डोमेन्स. अभी मैं बताती हूँ आपको माइक्रो डोमेन्स किसको बोलते हैं. माइक्रो डोमेन जब हम क्लस्टर्ड फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होता है, तो लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन में आपके ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, मेम्ब्रेन में ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसाइल टेल हैं. बट ये जहाँ जहाँ क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो डोमेन. तो जो भी आपका लिपिड राफ्ट है उसमें जो हमारे लिपिड्स हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट है. अब देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है. तो लिपिड राफ्ट में एज यू ऑल नो कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोमाइलिन बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज स्पिंगोमाइलिन्स. Why they are called as microdomains? Because the lipids do not mix uniformly here. Uh, in contrast to it, they form clusters, and whenever clusters are formed, it is called as microdomains. अब जो राफ्ट्स होते हैं इसमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, बिकॉज 2 मार्क्स का सोर्स आपको कभी नहीं पता होता, राइट. बहुत ज़्यादा डीप में कभी भी किसी रिसर्च आर्टिकल से क्वेश्चन निकाल लेते हैं या कहीं से भी निकाल लेते हैं. हावेवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइस, बट स्टिल आपको स्कोर करने के लिए कभी कभी हो सकता है ये सब पॉइंट से हेल्प मिले. तो जो राफ्ट्स हैं वो लिक्विड ऑर्डर्ड फेज में हो सकते हैं या लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में हो सकते हैं. अगर वो लिक्विड ऑर्डर्ड फेज में होते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पिंगोमाइलिन. उसका एग्जाम्पल है हमारा स्पिंगोलिपिड. और अगर वो लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज में होते हैं तो उसका एग्जाम्पल है हमारा फॉस्फोलिपिड. देन द क्वेश्चन वॉज कि वो फैटी एसिड दैट हैव द टेंडेंसी टू एग्रीगेट. सो द फैटी एसिड दैट हैव द टेंडेंसी, वैसे तो फैटी एसिड्स कैन एग्रीगेट इन माइसिलीज और लाइपोसोम्स, बट जब आप एक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो तो मेम्ब्रेन में दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जेल एंड सॉल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, whenever there are saturated fatty acid, whenever there are saturated fatty acid, तब क्या होता है कि वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड whenever there are unsaturated fatty acid तो वो सॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक यूज़ कर सकते थे कि आप ऑप्शंस पे जाओगे. ओके, लॉन्ग फैटी एसाइल चेन है, देन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन है. ओके, दिस मीन सैचुरेशन, राइट. तो लॉन्ग मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम विल बी मोर. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं उतनी कम ही फ्लूइडिटी होती है. तो ये फ्लूइड तो नहीं होंगे, यानी कि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके कार्बन आइटम की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपकी फ्लूइडिटी बहुत कम होगी. तो यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि जेल लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, कौन एग्रीगेट हो जाएगा. कभी भी आप जेली देखते हो, जेली में कुछ भी लूज़ नहीं होता ना, वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं. तो जेल लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, जिसमें कार्बन की लेंथ ज़्यादा होगी फर्स्ट. देन कम टू सैचुरेशन, अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि अनसैचुरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्लूइडिटी. जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन उतना ही ज़्यादा फ्लूइड मेम्ब्रेन. तो इधर जितना बड़ा आपका कार्बन चेन हो, जितनी ज़्यादा सैचुरेशन हो, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, एग्रीगेट होंगे. दे विल फॉर्म व्हाट, दैट मच जेल लाइक स्ट्रक्चर. तो कभी कभी क्या होता है, आपको बेसिक्स जानने होते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई देम इन क्वेश्चंस. ओके, तो पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई. मेनी स्टूडेंट्स डिड इट करेक्टली, वेरी गुड. Then this question, actually I typed it wrong because I read, so this is a single pass membrane transporter, so I read it as this. I thought this is 7 pass transmembrane because I read in which year, 2018. So I actually forgot. I was reading it for you guys, but then I realized, oh my god, glycoforin is a single pass transmembrane protein. Only when this girl, she actually messaged me that, you know, this is a single pass transmembrane protein, then only I realized, okay fine, I typed wrong. So the answer was glycoprotein because first it is present on the membrane of RPC, and this is most abundant. This is again a statement which is present in Pathfinder as well. अब हम थोड़ा सा ग्लाइकोफोरिन के बारे में जानते हैं. तो ग्लाइकोफोरिन is a single pass transmembrane protein, that's what question has mentioned. Then this is type 1 protein which contains what, N-terminal cleavable signal sequence. It contains N-terminal cleavable signal sequence. This is a sialoglycoprotein.
Sialoglycoprotein means it contains sialic acid, and because of sialic acid only, the RBC contains hydrophilic charge. What contains? It contains hydrophilic charges because of the presence of RBC, or in other words you can say because of the presence of sialoglycoprotein the RBCs are charged. It is highly glycosylated protein, again it is 60% glycosylated. So these statements can only help you. You can memorize these statements, and this question can come in 4 marks or 2 marks, because this is an important question, and many times they have asked that this is most abundant, so this time they can ask sialic acid in match the following, like at one side they can give this sialic acid and somewhere they can write RBC, so this can also occur. Okay, then there is one bonus question from my side. I don't think bonus question you guys like or not, but still, okay, jokes apart. So the bonus question is, in case of sickle cell anemia, जब भी sickle cell anemia होता है, जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है. तो यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन दिस इज, वेदर इट इज transition or transversion. So either in comment section, or you can DM me the answers in Instagram or in Telegram or in Instagram comments. Better will be you can write here in the comments itself that in sickle cell anemia the type of mutation, either it is transition or transversion. Okay, I want these answers from you. Then yes, I'm going to start one new thing, that I'll be dealing with Tej and Jigar from tomorrow or day after tomorrow. Whenever I'll get time, I'll start recording. So many students have told me that yes, this will be helpful from them. So we'll deal with Tej and Jigar, and first I'll deal with CSIR related topics according to syllabus, because we don't have to bifurcate from the syllabus, and then I'll deal with, along with this I'll deal with PhD interview questions, okay, from this book only, whatever can be framed from this book. So this is the starting. Slowly we'll add on कितना content हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, because these are the things जो आपको in future they'll help you or they'll help your juniors, या जो भी लोग add होते जाएंगे, they are very helpful things. At my time there was nobody who was teaching authentic books, and I think अभी भी कोई नहीं है जो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ाए, या दीज आर द बुक्स जिनको हाइप बना के रखा है हमने कि यार स्टार्ट करेंगे, या कोई बच्चे ही पढ़ते हैं. सो दिस शुड नॉट बी द केस, हम सब पढ़ते हैं. ओके, वी विल स्टार्ट, मज़े में एंजॉय करके पढ़ेंगे विथ क्वेश्चंस. तो अभी के लिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट वाली सीरीज़ में मिलते हैं. ओके.